Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are going to read the lesson long I. आज हम क्या पढ़ेंगे? Long I. Words with the long I sound. Find the word with each different endings. It, ein, it. So these are the words that you have to find. ITE, INE, IGHT. Okay. So first of all, I'm going to tell you the difference between long I and short I. Simple difference you have to keep in your mind that long vowels say their names, but when we talk about short vowels, we heard their phonics. Okay? जब शॉर्ट वॉवल की बात होती है तो हमें सिर्फ उनकी फोनिक्स सुनाई देती है, ठीक है। और जब लॉन्ग वॉवल्स की बात होती है तो लॉन्ग वॉवल्स अपना नेम लेते हैं, ठीक है। जैसे लेट्स हैव एन एग्जांपल दैट द वर्ड इज बिट। ब इट से BIT आपके पास स्पेलिंग्स है बिट और BITE बाइट। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में आई आ रहा है। BIT तो पहले 3 लेटर्स हैं, वो स्पेलिंग सेम है। डिफरेंस इनमें ये है कि बिट में आपको आई की फोनिक्स सुनाई दे रही है और बाइट में यू कैन हेयर द लॉन्ग आई इज टेकिंग इट्स नेम। सो हेयर यू कैन फाइंड द लॉन्ग आई साउंड। Bite, line, shine, night, right, and kite. These all words containing the long I sounds. Which words above rhyme with bite? So you have to find out the rhyming word of bite. Here is the rhyming word of bite, kite. How do you spell the three words? Right, light, and nine. So spellings of right: WRITE, LIGHT, light, NINE, nine. Spelling dictation: listen to the spellings and write the words. Point to the picture above, say the word. So here is your spelling dictation. The teacher can speak spellings in words in front of you and you can spell it and write the correct spelling, okay? Or you can listen to the spelling and write the word, okay? Like WRITE. So quickly write spellings. WRITE and then point to the picture that where it is. Here you go, okay? Next is poem. Read the poem. Sailors sometimes look at the sky to find out what the weather will be like. Red sky at night, sailors delight. Means when there is a red sky at night, there will be the happiness of sailors for the happiness for sailors. Red sky in the morning, sailors warning. So here is this poem is about the weather. When there is red sky at the night, then weather will be clear in the morning. But when there is red sky in the morning, it's mean there is the danger of storm. Okay. So next, which word rhyme? So you have to find out the rhyming words from here. Night, right. So do you know what is the rhyming, what is the meaning of rhyming words? Rhyming words mean same sound, okay? Next is which words have the long I sound. So here are a lot of words like bite, line, shine, night, right, light, nine, right. Remaining you will find out because you know that what are long I sounds words. तो आपने खुद ढूंढने हैं कि कहाँ पे long I अपना नेम ले रहा है, ठीक है। Which letter makes the long I sound in the sky? Sky. तो कौन सा word? G. आपने guess कर लिया. Yes, the letter Y makes the sounds of letter I, long I. Next is compound words. A compound word is a big word made of two little words. Find two little words in each big word. How many syllables are there in each word? Clap the syllables. सो सिलेबल्स क्या होते हैं? वॉवल साउंड्स होती हैं, ठीक है। और कंपाउंड वर्ड व्हेन टू स्मॉल वर्ड्स मेक अ बिग वर्ड, ओके। जब दो वर्ड मिलके एक बड़ा वर्ड बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? कंपाउंड वर्ड कहेंगे। सो सन प्लस लाइट, व्हाट इज दिस वर्ड?
sunlight. Night plus time, night time. So these are separate word, but when they combine together they make a क्या करते हैं ये एक कंपाउंड वर्ड बनाते हैं. दे मेक कंपाउंड वर्ड. मून प्लस लाइट, मून लाइट. दे आर द सेपरेट वर्ड. मून भी एक वर्ड है, लाइट भी एक वर्ड है, लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं then they make a compound word. It's called moonlight. Night clothes, daytime, daylight. अच्छा, अभी थोड़ी देर के लिए आप रिकॉल करें कि हम लोग कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो कंपाउंड वर्ड यूज़ करते हैं, लाइक क्लासरूम, गोट, ओके, और कौन कौन से हो सकते हैं. बर्थडे, यस, ठीक है. सो ऐसे बहुत से वर्ड्स होंगे जो हम कंपाउंड वर्ड यूज़ करते हैं. वो कुछ आपने मुझे कमेंट में बताने हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं. अगर आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं तो 5 to 10 वर्ड्स तो आपके माइंड में अभी आ रहे होंगे. और अगर आप ने सोचना है तो यू कैन थिंक अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट इज match one of the words about to each clue. The light from the sun, yes, you know, light from the sun, what it is called? Sunlight. Opposite of daytime, of course, night time. The opposite of night time, daytime. Clothes you wear in bed, night clothes. So where were you yesterday? So here are time expression that you have to tell that what you were doing yesterday in the morning, what you were doing yesterday in the evening. So here is the question for you. Where were you yesterday? Ask your partner question. Use the time expressions in the box. Where were you in the morning? I was at school. So where was you? Then you ask about another person in the family. ओके, तो यहाँ से आप अपने फ्रेंड्स से क्वेश्चन कर सकते हैं दैट वेयर वर यू इन द इवनिंग. ठीक है. सो यहाँ पे आपने खुद से क्वेश्चन बनाने हैं. टाइम आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ द टाइम इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून. सो इट्स अप टू यू. At night, okay, you have different time and you can use another days as well, like yesterday, today, tomorrow. So it's all about long I. The lesson is all about long I. So for quick recap, I'm telling you that long I, when you hear the sounds of letter I's name, that letter I is taking its name. It's mean here is long I. Okay. So I hope you like the videos. For more videos, please like and subscribe and don't forget to share. Thank you.